बच्चों, how are you? I hope you all are doing fine. So let's start the new chapter, Gianna and Dudu. So you know everyone that we discussed the lesson goal before starting the story. So let's discuss this, that what you are going to learn from this chapter. In this lesson, the students will discover how kindness and love can make a lonely animal happy. है ना, किसी की दया भावना और प्यार से कैसे एक उदास सा अकेला एनिमल यानी जानवर खुश हो सकता है. They will also develop the ability to understand the importance of taking care of pets and treating them with care. आप जैसा उसको ट्रीट करेंगे वैसा ही आपको वो प्यार करेगा, आपको वो रिवर्ट करेगा. About the story. This story is about a lonely street dog named Dudu. A girl named Gianna found her in a park and gave him a home. Dudu enjoyed his new life, playing with his friends and feeling loved. He hoped his friends would also find caring homes like he did with Gianna. Ready up? Rearrange the letters and write the names of animals like monkey. So now is the time to start the story. Let's read the story. I was lonely dog on the street. Most of my day I used to look around the food and water. Some people gave me what they did not want to eat. बहुत अकेला महसूस करता था वो, गली में अकेला था. बहुत सारे दिन उनके ऐसे जाते थे जब वो खाना ढूंढता रहता था, पानी ढूंढता रहता था. कुछ लोग ऐसे थे जो उनको खुद कुछ खाना नहीं होता था, वो उसे दे जाते थे. आई एट इट इफ़ आई लाइक्ड इट. तब भी वो चॉइस देखते थे, अगर उसको पसंद होता था तो वो खा लेते थे. देन वन डे अ गर्ल सॉ मी इन अ पार्क विद माई फ्रेंड्स. शी लाइक्ड मी एंड टुक मी होम. She bathed me and dried me with a towel. Wow, how smart she made me. कितना सुंदर बना दिया. पार्क में से उठाया और क्या किया, मुझे घर लेके आए, बात दिया, सुखाया टॉवल के साथ और कितना सुंदर बना दिया मुझे. How good I smelled. Then she gave me some warm milk to drink in a bowl. तो उसे बहुत बाउल में एक गरम दूध भी पीने को मिला. I was also given a beautiful kennel to rest and sleep. She also took me to a vet and she is my angel. So वो उसको वेट के पास भी लेके गई, दूध भी पिलाया. तो मेरे लिए तो वो एंजल थी. Gianna, she has given me a name too. She calls me Dudu. I like it a lot. She has also given me a smart black collar with a long leash attached to it. She takes me to the same park so that I can meet my friends. She removes my leash and lets me play with them. तो वो तो मुझे पार्क ले गई, मेरी लीश भी खोल दी और मुझे अपने फ्रेंड से मिलने भी दिया. And we bump into each other and roll over the grass. We pull each other's ears and lock paws. She throws a ball and we all run and catch it for her. She also treats us with a bone. So ऐसी सुंदर एंजल जो मुझे मेरी खुशी के लिए हर काम कर रही थी, मुझे पार्क ले गई, मेरे फ्रेंड से मिलवाया, हम लोग आपस में खेले, फिर मुझे बॉल से हम सबको खिलवाया और फिर हमें ट्रीट भी दी. I love spending time with my friends. I wish someone takes them home too and gives them a name. I wish they are also loved and cared the way Gianna does it for me. So वो अपने दोस्तों के लिए भी यही दुआएं कर रहा था बच्चों, कि उनको भी कोई अपने घर ले जाए और जियाना की तरह उनको भी एक नाम मिले जैसा मुझे नाम मिला है. सो बच्चों, अगर आपको कोई भी स्ट्रीट डॉग मिलता है तो उसके साथ ऐसे ही प्यार और दया भावना दिखाएं. अगर आप उसे घर नहीं ले जा सकते तो भी आप उसे कम से कम खाने के लिए दें, उसकी देखभाल करें ताकि उनको भी अच्छा फील हो. आई होप आप समझ गए होंगे. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन सम वर्ड्स. Kennel, a house for a dog. Leash,
a rope we attach to our pet's collar. Paws, furry hands and feet of animals. Vet, a doctor who treats animals. Bump, hit. Tricky words बच्चों. Lonely, street, friends, tall, smart, ball, angel, collar, grass, throw, catch, bone. So these were the tricky words. Now we have speaking session. So look at the picture carefully and answer the questions orally. So bachcho, you have to just answer the questions orally. You don't have to write the answers. Now you have listening session. So your teacher will read out the sounds of some animals, listen the sounds carefully and identify the animal. Then write the names of the animals which make these sounds. आपको animals के नाम भी लिखना है, पहले आपको carefully सुनकर उन sounds को पहचानना है. Now you have writing session बच्चों, comprehension. Use the pencil and fill the correct circle given alongside MCQs. You have in B part, state true or false for the following statement. So if you read the statement and you find it true or correct according to your chapter, write here true, otherwise false. In C part, number the events as they happened in the story. तो आपको सारे events को sequence में डालना है जिस तरह से story में दी गए हैं. D part, answer these following questions. Answer the following questions. What you have to do? You have to write the answers in your notebook, okay, based on your chapter. Now, word pool, match the animals with their homes. And B part, complete the sentences. Okay, what is the grammar in action now? There are 26 letters in English alphabet. आप सबको पता है, letters, we have 26 letters. Which are those? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, G, U, V, W, X, Y, Z. So ये हो गए आपके 26 letter. Now we have separated A, E, I, O, U. So these are vowels, right? And rest of the letters, suppose I take out 5 vowels out of these 26 letters. So we have now 21 consonants. So let's have some examples. B, C, D, F, G and so on. So ये सारे हमारे पास consonants हैं. So we put N before the words that begin with the vowel sound and we put A before the words that begin with the consonant sound. जो वहाँ पे भी आपको consonant sound मिले, you have to add A for singular noun, right? Singular noun, and N you will add for vowel sound noun. Read the following sentences. Okay, so you have to just check it. The monkey is eating a banana because B is consonant and my mother gave me an apple. So apple is beginning by A is vowel, right? A, complete the sentences with A or N. Now you have to check your learning. Very good. B part, tick the correct sentences. Okay, thinking corner बच्चों. Just like we animals are also living beings, just like we animals are also living beings. They cannot speak, but they too have emotions and feelings. They also feel happy and sad. Write yes or no for the following X. So हमारी तरह एनिमल्स में भी जान होती है, उन्हें भी दर्द होता है, वो बोल नहीं सकते, बट यस इमोशंस उनके पास भी होते हैं बच्चों, फीलिंग्स उनके पास भी होते हैं. जैसे हमें नाराज़ होना आता है, खुश होना आता है, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं. तो वो जब खुश भी होते हैं, सैड भी होते हैं, तो आपको जो एक्ट करने चाहिए, जो एक्शंस आपको लेने चाहिए उनके लिए, उस पर आप, अगर आपको लगता है सही है तो यस लिखिए, गलत है तो नो लिखिए. वी गिव आवर पेट गुड डॉग फूड एंड वाटर एवरी डे. क्या आपको लगता है ये एक्शन सही है? यस, ये सही है तो आप यस मेंशन करेंगे. सो चेक अकॉर्डिंगली बच्चों. क्रिएटिव साइकिल, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द बेबीज ऑफ दीज एनिमल्स, राइट? एंड व्हाइल डूइंग दिस एक्टिविटी, हैव फन, एंजॉय बच्चों.